और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। तो एक तरफ अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की तैयारी है, तो दूसरी ओर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ट्रंप ने भले ही भारत को अपना बहुत बड़ा दोस्त, हितैषी बताते आए हैं और मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो ट्रंप की नीतियों से मेल नहीं खाते भारत के। वो कौन कौन से मुद्दे और भारत को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ट्रंप रिजीम से, और दोनों देशों के बीच ट्रंप रिजीम में अब कैसे प्रगाढ़ होंगे रिश्ते, एक दूसरे के कैसे करीब आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे खास मेहमान के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत सुनिश्चित हुई, तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल मंच पर ट्रंप की वैश्विक नीतियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगर बात करें भारत की, तो ट्रंप ने भारत को अपना सच्चा दोस्त करार दिया है और पीएम मोदी से दुनिया की शांति के लिए मिलकर काम करने की बात कही है। जाहिर है ट्रंप का ये बयान भारत और अमेरिका के आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का काम करेगा। फिलहाल तो चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत हमेशा ग्लोबल मंच पर अपनी आवाज उठाता रहा है। अब इस आवाज में ट्रंप की भी आवाज जुड़ सकती है, क्योंकि ट्रंप ने अपने संबोधन में पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद का जिक्र किया था, तो वहीं चीन को लेकर भी ट्रंप की नीतियां भारत से मेल खाती हैं। वहीं बात करें ट्रंप की टैरिफ नीतियों की, तो यहाँ भारत की परेशानियां कुछ बढ़ सकती हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार ये कहते आए हैं और अपने चुनावी प्रचार में भी भारत में लगने वाले ऊंचे टैक्स का मुद्दा उठाया था। जाहिर है इस मोर्चे पर भारत को अमेरिका के साथ तालमेल बिठाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन दोनों देश इस मुद्दे पर एक सकारात्मक पहल करते हैं तो टैरिफ के मुद्दे पर बात बन सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल रहेगा। 2016 में जब ट्रंप पहली बार चुनकर व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तो उस समय की वैश्विक स्थितियां अलग थी और अब बिल्कुल ही अलग है। उस समय ट्रंप नौसिखिए की तरह व्हाइट हाउस पहुंचे थे, लेकिन इस बार वो अनुभव और आक्रामकता के साथ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का इरादा रखते हैं। अब देखना होगा कि ट्रंप के हाथों में सुपर पावर अमेरिका की कमान दुनिया भर में क्या प्रभाव डालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं रिपब्लिकन हिंदू गठबंधन के चेयरमैन और बहुत ही चर्चित अमेरिकन उद्योगपति शलभ कुमार साहब। शलभ सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। यूएस पे तो मॉर्निंग है, बट भारत से आपको नमस्ते। और शलभ साहब उन लोगों में से हैं, उन शख्सियतों में से एक हैं जो कि ट्रंप के बड़े पुराने करीबी सहयोगी रहे हैं और भारत से परिचय कराने वाले बड़े शुरुआती लोगों में से शलभ साहब रहे हैं। शलभ सर, मैं कुछ दिनों पहले आपका इंटरव्यू सुन रहा था और उस वक्त आपने कहा था कि बहुत क्लोज फाइट है, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें तो लगा कि एक तरफा मामला था। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह से एक तरफा जीत हो जाएगी और उसके कारण क्या रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। मैं थोड़ा हिंदी में कोशिश करूंगा, इंग्लिश में कम से कम। श्योर सर, श्योर। तो पहले what the math will tell you that he should have won easily, because going back 8 years, at this point on the morning of the election day, Hillary was ahead 5 to 6 points on every swing state. So from that logic, it would appear at this time, because it was very tight, it was neck to neck. So if you apply the same math, 5 to 6 points, President Trump would have won easily. But still, a lot of people were predicting that the results will not be out until a week, 2 weeks, December 10th. They were talking about whether Trump will concede this time or not, or would it be like 2020? But as the counties, what is most important is the results from different counties in the swing states started to come out. I was able to make a prediction that at 9 p.m. Eastern Standard Time on November 5th itself,
that the election is over, that it will be declared today itself, just like in 2016, and President will win. My calculation was 312 electoral votes, as well as it will be announced between 1 a.m. and 2 a.m., and it got declared right around 1:40 a.m. President Fox News declared, made its projection, and 10 minutes later, President Trump came out and gave his victory speech. All right, sir. सर, अब थोड़ा भारत के नज़रिए से हम बात कर लेते हैं। हालांकि आप हमेशा से कहते आए हैं कि जो भारतीय हिंदू अमेरिका में हैं, उन्होंने बड़ा क्रिटिकल रोल अदा किया है। ख़ास तौर से जो 7 स्विंग स्टेट्स थे, वहाँ पर आपका मानना है कि लास्ट टाइम जो कैंपेन हुआ और जो मार्जिन्स रहे, उसमें इंडियंस की भूमिका बहुत ज़्यादा थी। तो क्या हम अपेक्षा करें ट्रंप साहब से कि उतनी ही गर्मजोशी से वो भारत के लिए भी दिल खोलकर पॉलिसीज का निर्धारण करेंगे सर? एब्सोल्युटली वही होगा। पहले तो at least 50% of the margin. You see, 3 states, that is, let's look at Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. The margin of victory of Trump is about 450,000 votes. And at least half of it, I would say 225,000, we're going to conduct a poll through actually your organization, just like what we did in 2017, that half of that, 225,000 of that, came from what we call a net vote gain from Hindu American community. So half of the victory, half of the margin, half of the votes came from the Hindu community. One very interesting fact which corroborates this is, look at what happened in New Jersey. आपको मालूम ही होगा कि न्यू जर्सी में, आपके वैसे हेडक्वार्टर भी वहीं न्यू जर्सी में है, तो न्यू जर्सी is a place which has the highest number of Hindu American voters. Not just population. Population is almost gone up to 700,000, but the voter is somewhere like 500,000 voters are there in New Jersey. New Jersey in 2020, Biden had won by 16 points, 16 percentage points. And guess what happened? Here, this time it dropped to only 5%. So there is a difference of 11%. Where did that come from? 11%, that almost translates to 400,000 new votes, and as compared to 2020. So it's pretty obvious that our last-minute campaign resonated with the residents, the Hindu Americans in New Jersey, and practically seemed like all 90% or 95% ended up voting for President Trump. So that's as far as, again, the voting is concerned, and the interest of Hindu Americans are concerned, interest of relationship between United States and Bharat is concerned. President Trump का इस बार स्लोगन था, भारत एंड अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त. Okay. तो वो चलेगा, वो तो होगा ही. उन्होंने 31st को ट्वीट की बांग्लादेश के हिंदुओं की persecution के बारे में. He is totally against persecution of Hindus. He recognizes that Hindus have been persecuted for a long time, and so he has shown his total support for the welfare of the Hindu American community, or not just Hindu American, but Hindus across the world. Right, sir. सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर. जब बात आती है पीपल टू पीपल कनेक्ट की, तो एक अलग टच उनकी फीलिंग्स में दिखता है. बट जब बात आती है इकोनॉमी की, तो फिर अमेरिका फर्स्ट की नीति लेकर भी ट्रंप साहब चलते हैं, और उसको लेकर फिर भारत पे थोड़ी सी चिंताएं हो जाती हैं. ख़ास तौर से जिस तरह से वो टैरिफ किंग बुलाते हैं भारत को,
2019 में जीएसपी का मुद्दा रहा, वो आप जानते ही हैं। अभी जो उनका एक आउटलुक आया है इकॉनमी का, उसमें वो 20% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, मोर देन 200% ड्यूटी ऑन कार्स की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमारी वीज़ा H1B वीज़ा का इशू है, बहुत सारे इशू ऐसे हैं सर जिनको लेकर भारत में बड़ी चिंताएं जताते हैं ट्रंप रिजीम को लेकर। उस मोर्चे पर कैसे चीज़ें ठीक होंगी सर? India could be assured that none of this conversation is going to be applicable to them as far as the tariffs are concerned. He is pointing towards China. China is the existential threat for United States of America as well as for India. That's where the tariffs are going to go. So we are pushing for, and he has, I can tell you that, it's not a public policy yet, but he has expressed support of a bilateral free trade agreement between United States and India. So the whole topic of tariffs will go away. That just will go away. United States and India, the first and the third largest economies in the world, they really need to be tied to, at the hip, and you can look forward to extensive cooperation between the two countries in terms of economic front, in terms of foreign policy, in terms of military, defense posture. Everywhere else, you'll see United States and India become more like what United States and the UK used to be. So right. I will not be really concerned about that. In fact, on the agenda is how do we bring, there are at least, let's say, 6 million jobs in America that have been moved out of America to China. So the attempt here is going to be to bring those manufacturing jobs, manufacturing itself, particularly in electronics, because I'm an electronics guy, I keep track of that fairly well. So that out of the 6 million, if you could bring back 3 million or so into United States, and other 3 million or so which cannot be brought, we would like, President Trump would like to have those manufacturing jobs moved to India. So with Trump presidency, India is a net benefactor on the economic front all the way. ऑल राइट सर, एक खास बात मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा, और मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप जब पर्सनली, क्योंकि आपको एक दशक से ज़्यादा हो गया है ट्रंप के साथ बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हुए, कुछ बातें ऐसी भी होंगी सर जो आप और ट्रंप साहब भी चाहते होंगे कि भाई भारत की तरफ से भी हमें इस तरह का अगर सहयोग मिले तो ट्रंप ज़्यादा दिल खोलकर भारत की मदद कर पाएं या भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोगों को आगे बढ़ाएं। आपके ऑब्जर्वेशंस वो क्या हैं जो ट्रंप को नहीं भारत को करने होंगे ताकि अमेरिका और भारत के रिश्ते और मजबूत हों? One thing we have to watch out is India's working with Russia. Even though at this point President Trump and Putin, they have a fairly good, let's say, understanding. I will not call it a relationship, but they have a good understanding. And we do not want Russia and China to get together, and so that would be a problem for United States and India as well. And India needs to moderate its relationship. And I understand the military need, because the Indian armament mostly came from Russia, but it is now less dependent on Russian arms and producing its own arms, as well as also importing from United States of America. So, let me also tell you that I work fairly closely with
I've known him for a long time. Your External Affairs Minister, Jaishankar. And so he takes a fairly independent stand, but he also subconsciously knows that the long-term relationship is to be between United States and India, and not United States and Russia, or Russia and India. So that's one area where where Bharat needs to moderate its policy. And the second one is Iran. India needs to become a lot more critical of Iran, as President Trump is expected to be. He's just going to make sure that there is no way Iran becomes nuclear, and India could express its support in that policy. ऑल राइट, सिर्फ न्यूक्लियर का ही इशू है सर? बाकी जो नॉर्मल हमारे ईरान से रिश्ते हैं उनको तो हमें सामान्य बनाना ही होगा, क्योंकि हमारे अपने हित भी जुड़े हुए हैं। हमारा चाबहार पोर्ट है, हमारा एक्सेस टू मिडिल ईस्ट है, उसके लिए हमें बड़ा इंपॉर्टेंट वो लगता है ईरान को। सिर्फ न्यूक्लियर पावर बनने की बात है सर, या नॉर्मल रिश्तों पर भी ट्रम्प साहब को आपत्ति होगी ईरान के साथ, भारत के? But he's smart enough to know that every country needs to watch out for its interest. But of course, we would be a lot more delighted. We would be delighted from a Trump standpoint as well, that if through the economic, let's say, relationship between Bharat and Iran, we could persuade Iran not to have this Hamas and the Hezbollah and all these problems Iran creates. Iran is going to come under severe sanctions at this point, and it's like it was going broke during the first Trump presidency. Now it's going to become even tougher for Iran, and if India can persuade Iran to at least just stay within itself and not export terrorism, that would also be appreciated. All right, sir, मैं आपका ज़्यादा वक्त अब नहीं लूँगा। एक आखिरी सवाल जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसर्न का रहता है वो है हमारी वर्कफोर्स का। आप खुद इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमारे पेशेवर हैं उनके जहन में बार बार आता है हमारा H1B वीज़ा का क्या होगा। जो एनुअल अलॉटमेंट है लगभग 85,000 H1B वीज़ाज़ का, अगर ट्रम्प आए पावर में, जो कि अब आ रहे हैं, तो उनका क्या होगा? वो कम तो नहीं हो जाएंगे सर? See, इसमें Deepak, what we have to do is to look at the real problem. The real problem is, let me also first tell you what the solution already proposed by President Trump is. He openly declared his interest in having our DALCA kids, Deferred Action on Legal Childhood Arrivals, that originates from a 140-year wait period for H-1B applicants for green card. So he's already declared an executive action which will take place very soon, that after he becomes president, that is all students of American universities automatically qualify for a green card, so they do not get kicked out, because otherwise when they become 21 and their parents are H-1B waiting in line to get their green card, that problem will go away. Now, the other problem of long-term wait for H-1B, my own recommendation is the number of H-1B applicants for green card needs to drop a little bit. It's right now 65,000. So current policy is, and that has been there for the last 40 years. It's got nothing to do with any president. It's been there just for all this time. Country-based quota.
even though 65,000 people of Indian origin born in India with Indian citizenship, they get approved for H-1B, but only 7,000 are allowed to apply for green card, they actually all are allowed for green card, but they give only 7,000 because there's a quirk in the system that per country quota is only 7,000. President Trump is for merit-based immigration. Forget about whether you were born in India or whether you were born in Africa or Australia or wherever. It does not matter. It should matter only what your talent is. So we are going to be pushing, and President Trump is in support of that, is to eliminate this country-based quota. So instead of 7,000, it could be all 65,000 or 55,000 that get cleared in terms of the green card. So that's where the problem is. And again, the root is from a long time ago. Actually, Democrats are not interested in solving that problem because they are a lot more focused on the interest of all the illegals. 200,000 a month, 10 million illegals who came through the southern border of the United States in the last 4 years. So as far as the merit-based legal immigration is concerned, I would say that legislation is around the corner. राइट सर, वैसे मेरे सवालों का सिलसिला तो ख़त्म हो गया क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है, बट एक सवाल जो मैं ख़ुद को रोक नहीं पा रहा हूँ आपसे पूछने के लिए, सर हम कुछ एक्सपेक्ट करें, आप किस भूमिका में होंगे? इतना लंबा साथ रहा है आपका और ट्रम्प साहब का, आपको हम किसी नई भूमिका में देख रहे हैं साहब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में? टफ क्वेश्चन. अगर प्रेसिडेंट बोलते हैं, इफ ही आस्क मी, I'm not going to repeat this, but during our Diwali celebration in 2022, he proposed several things, including my becoming U.S. ambassador to India. Wow. Openly declared that. And right now, however, I'm in a position that I need to focus on our business, AVG business. Right. So I'm not sure. But certainly I'll hope that somebody from RSC, Republican Hindu Coalition, and a strong Hindu becomes ambassador, U.S. ambassador to India. So let's see what happens. All right, sir. All right, sir. हमें बहुत खुशी होगी, वैसे तो आप ऑलरेडी उनके बहुत करीबी हैं, लेकिन हमें बहुत खुशी होगी कि आप और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे ट्रम्प साहब के साथ रहें, ताकि आप बेहतर समझने का मौका दें ट्रम्प रिजीम को कि भारत की चाहतें क्या हैं और भारत को किस नज़रिए से देखा जाए. इसी उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट टू यू सर. बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए सर. थैंक यू सो मच.